Okay, can you see the screen? Yeah, I think it is Yes, sir. visible. So we'll be discussing regarding the VI editor. Okay. So see, in general, whenever we are going to create some file, either we have to use the touch command or the cat command. Okay. See, suppose I have a file and we are putting some content there. Okay. Now, what if we want to make some modification to the content of the file? Okay. As of now, we have not seen any this type of editor. Okay. Say for example, when you go to the directory, okay, let me see pwd. There are we're in the Kandalpur directory. Let us go for ls and cddir1, enter. Okay, you put ls, you will find some file there. Okay, so cat, if you go for file file1.txt. Okay, so I think there is no can you remember any file where some content was there? Okay, we'll create some file, no problem. Okay, so uh, let me take one more. Get say file two, file three. Can anyone remember where we have written something? No, right? Uh, maybe in some other place I have put this one. Okay, so ls say dir2, enter. No. Okay, let us create some create one file there. So what is the command to create a file using cat command? Anyone remembering? What does the command to okay create the file using cat command? Say touch couch the touch say a new file 1.txt. See, this way we can create the file. Okay, now what if we want to make some modification to the file? Okay, just like if you create a file in ms word. Okay, ms word linux inode. So these are some content. If you want, then easily you can suppose in a device id it should be device number, so you can make this type of modification. Okay, you can save it. Okay, you can undo it. So all these different type of tasks can be done, right? So this is called a modification. So using GUI we can make any such type of modification to an existing file of any category. Okay, whether it may be text file. Okay, it may be excel file, powerpoint file, or anyone, right? Now in linux it is provided with us one, okay, very good and equipped with lots of features, classic text editor. Okay, just like your notepad. Okay, how many of you are familiar with notepad? How many of you are familiar with notepad? Notepad, you know, everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay, in notepad, for those who do have confusion regarding notepad, let me go to open this one. Okay, notepad. So see, this is a text editor. Okay, this is not a word processor. You cannot make, okay, such type of major changes that we can done in case of your ms word. Okay, so this is a text editor. In the same way, suppose you can type something. Suppose, hi, I am a man. Just for example, you're typing something. Okay, you can make some modification or something like this. Okay, so this is, so in the same way, if you want to go to modify this file, new file 1.txt in linux, you have to open this file using what, the vi editor. Okay, so today we'll be discussing regarding vi editor. So how to open it? You have to type what, the vi. Last class I have told you that first of all you will have to put the command. Okay, then some then what are other arguments of the command. Okay, so vi NEWFILE 1.txt. Now this file is open in a modified format. Okay, but okay, so this is the front of your or you can say what, the
background of your vi editor. Okay, so if you can remember, when we create the file using touch command, we have not put any content. Okay, that's why it is showing as well the blank. Okay, so just before going to apply some commands and do some modification of your file, let us what discuss regarding the vi editor in brief. Okay, once you know all the commands and all, we will be going to the working in the vi editor. Okay, so okay, so let us go to the text first. Let us in Anupam is waiting. Yeah, so what is vi editor? So I'm sharing this link with you. This link is important for your note. Okay, you can use this as your class note, or I will create the note and I will send it to you using pdf. Okay, just give me some time, I will send you. Okay, I will not share the link. See, vi editor with command in Unix or Linux tutorial. Okay, so what is vi editor? The vi editor is a most popular and classic text editor. Okay, always remember classic. This is not the modern. This is what the classic text editor in the Linux family. Below are some of the reasons which make it widely used editor. Okay, it is available in almost all Linux distribution. First one. Next one is whether it works the same across different platform and distribution. Okay, right now I am using what a Ubuntu. If you go for using in the Red Hat and others, say suppose CentOS and all the commands that are working in the vi editor in case of the Ubuntu are exactly same in case of any other distribution. Okay, and next one is whether it is user friendly, hence million of Linux users love it and use it for their editing needs. Okay, so these all are the what are some of the advantage of your vi editor. Okay, in exam might be you will get some question like this. Okay, from the following, which are the different, okay, features of your vi editor? So these all are the features, 1 2 3. Okay, now see, for all each and every computer software user you are using, always update has come, right? So likewise, the updated or the modified version of your vi editor is what the vi modified or the vim player. Okay, vim editor or the vi editor is exactly same, or you can say what the enhanced version of your vi editor is called what the vim. Either you will use this one, the vim one, or you can use the vi. Okay, likewise the vi, there are few more editor. They are lvis editor, nvi editor, okay, nano editor and the file editors. Okay, these all are the classic text editors. Okay, but always remember, this is not the word processor. You cannot type a letter there. Okay, you cannot make a poster there. You cannot do such type of advanced operation like what the creation of table, okay, or mail merge and the coloring of text. This type of thing you cannot do in the classic text editor like vi. Okay, for that purpose you have to know what a word processor like ms word, okay, libreoffice word, open office word, something like this. Okay, so this is the vi editor. See, when you open the vi editor, okay, first of all, vi editor always open in what a command mode. Okay, suppose I am typing what a vi say the previous one, new file.txt. The mode where the vi editor is opening is called the command mode. Okay, you cannot type anything there. Okay, if I am going to type something, okay, you will not find anything there. Okay, so this is, now there is an option through which you can change the command mode to some another mode. Okay, so that you can put some data. Okay, this is the command mode. See, I am pressing now the from the keyboard. Okay, but you are not be allowed to
go for, okay, I by mistake I pressed the I, that's why we are going to what I insert something there. Okay, now go to this one, vi command mode. So when you by default open the vi editor, it is open in command mode. Okay, in the command mode you cannot insert any text. Okay, you cannot insert any text. Okay, the vi editor opens in this mode. Okay, and it only understand commands. Okay, it is just like your terminal window. In this mode you can move the cursor, okay, and cut copy paste the text. अगर पहले से कुछ text इसमें दिया हुआ है, then only you can do all these basic operation. Move the text, okay, the cut the text and the paste the text in a some other lines. Okay, so this can be done, and this mode also save the changes you have made to the file. Okay, and always remember commands are case sensitive. Okay, what is meant by case sensitive? That means the command you retain in capital is totally different from the command you are retaining what a small. Okay, this one. Then you should use the right letter case. That means suppose you are going to open something called one file. Okay, so you cannot put vi in capital. Okay, so you have to use the small. And suppose you want to insert some text content in the files. Okay, so in that case you can change the mode from command mode to the insert mode. Okay, now how to go to the insert mode? See, vi editor insert mode, one mode is what the command mode. By default the vi editor opens in command mode. Okay, so it is speciality of this mode is you cannot put any content there. Okay, right now I am pressing der all these keys. Okay, and I am not be able to insert anything to the file. Okay, now how it is possible for us? Now see, we are using this vi editor for text modification. Okay, now if we cannot insert the text, then how we are going to modify the text? Okay, so what to do, you have to convert the command mode into the insert mode. Okay, so that you can put data. So in that case what to do? Hello, am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay, see, in one class right now I'm taking one classes by the 4 different faculties, right? That's why there may be some disturbance. If you're not understanding anything, please let me know. Okay, from one class I'm taking class by the 4 different faculties. Okay, so from the command mode we have to convert it to the insert mode so that we can insert some text for the modification. See, this mode is for the inserting text in the file. Okay, देखो, in the command mode you cannot put anything there. See, right now I'm pressing F Z, so nothing is written there. Okay, so what to do? You have to what I converted to the insert mode. How to do? This mode is for inserting text in the file. Okay, you can switch to the insert mode from the command mode by pressing, okay, small I. Always remember. Okay, कमांड मोड से अगर हमको क्या करना है बोलो, इंसर्ट मोड तक ट्रांसफर करना है, देन वी हैव टू प्रेस माइनस आई, sorry, small I on the keyboard. Okay, see this one, if I press I, please have a look at this point, no line in the buffer. ठीक है, जैसे मैं I प्रेस करूंगा इसमें कुछ अलग सा लिखा आएगा. ठीक है, प्लीज हैव ए लुक हियर, this portion of the screen. ठीक है, देखो I small I प्रेस किया, now it is in a insert mode. Okay, now if I put F, you can see
I can put some text there. W we can put there. Okay, E R we can put there. S we can put there. So in this way, now we can move from here to there. Okay, right now all these lines are used. Okay, if there is some other text in this, okay, now you can move here and there. Okay, so all this is possible if we are in the insert mode. Okay, without insert mode this is not possible. Okay, someone saying something, someone saying something. Okay, so what I'm telling, what I've told, see, to modify the content of a file we have to use the vi editor. Okay, vi editor have the two different mode. One is your command mode and one is your what, the insert mode. Okay, so in the command mode we cannot put what, insert any text. Okay, now, yes, we speaking, any doubt, anyone, we speaking. Orindam Datta, Orindam Datta, you were telling something. Orindam Datta, you were telling something. Okay, if you have something then please let me know. Okay, now, see, these things always have to remember. From the command mode to insert mode, you have to press I. Okay, and from insert mode to again come back to the command mode, you have to press escape key. Okay, escape key is what, the leftmost, top leftmost key is called the escape key. Okay, when I press the escape key you can see the changes. Okay, अब इसमें क्या लिखा है बोलो, right now this is written as what, the insert. In the insert, when I press escape you can see the changes. Okay, escape, now see there is no insert, that means you cannot put any content there. Okay, you cannot put any content there. Okay, escape, that means I am right now I'm putting the W. See, you cannot put anything there. So this is get sense. Again you have to come back from the command to the insert, we have to place what, the I प्रेस करने से देखना है इसमें insert लिखा आ जाएगा. ठीक है, I can put anything there. Okay, can you see these things? In this way you can change from one mode to the another mode in the vi editor. Okay, let us go to the theory part. See, this mode is for inserting text in the file. You can switch to the insert mode from the command mode by pressing I on the keyboard. Okay, I press किया तो क्या हुआ बोलो, इसमें insert लिखा हुआ, अगर इसमें insert आएगा then only you can put some text there. Okay, once you are insert mode, any key would be taken as an input for the file on which you are currently working. Okay, to return to the command mode and save the changes you have to need to press the escape key. ठीक है, अगर insert mode से हमको command mode में फिर से बाहर निकल के आना है, then we are going to press the escape key. Okay, after knowing all these things, now we can go for opening the vi editor. ओके, स्क्रीन को एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है इसमें. देखो, तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, टू लॉन्च द वी एडिटर, ओपन द टर्मिनल और CLI एंड देन टाइप vi फाइल नेम. ठीक है, मैंने क्या किया था बोलो, फॉर आवर पर्पस एस्केप कॉलन WP, ये बाद में बोलूंगा. ठीक है, देखो क्या लिखा था मैंने बोलो, vi देन द फाइल नेम. So the same syntax you have to use here. Okay, vi file name. Okay, and if you specify the existing file, then it's up to नहीं है. ठीक है, only have to remember this one, vi file name. Okay, जैसे इसको खोला then you will find that screen.
देखो ये वाला स्क्रीन, और हम एक नया वाला खोल लेते हैं, सपोज vi से फाइल 10.txt एंटर, ये वाला स्क्रीन आया। ओके, इन दिस स्क्रीन देखो ये जो तुम्हारा कर्ली लाइन इसमें दिया हुआ ना, दिस लाइन मीन्स व्हाट द shows the unused line. Okay, देखो right now inside this file 10.txt nothing has been written, right, कुछ भी लिखा नहीं है। ओके, that's why ये सब में क्या बोलो तुम्हारा कर्ली लाइन है, that means this is a blank file. ओके, जितना कर्ली लाइन मिलेगा इतना क्या है बोलो, दिस ऑल आर द अनयूज्ड लाइन। ओके, देखो इसमें तुम जितना से इतना भर सकते हो, अपने आप तुम्हारा स्पेस एलोकेट होता रहेगा। ठीक है, दिस वन सी द स्पेस shows the unused line. ओके, प्रेस आई टू एंटर टू द इंसर्ट मोड। देखो अभी इसमें क्या लिखा था, ये वाला दिखा था, अगर इसमें मैं आई प्रेस करूंगा देन इट गेट चेंजेस टू समथिंग एल्स। देखो तो क्या करना पड़ेगा, आई प्रेस करो, ये तुम्हारा इंसर्ट मोड में चला गया। ठीक है, okay, now you can type something there. So what you are going to type, so suppose HELLO, hello world, WORLD. Take the new, suppose the name of my university is, suppose ASSAM, Assam downtown university. Okay, so whatever content you may have you can go on writing there. Okay, so जितना इस तरफ से आओगे इतना तुम एंटर प्रेस करते जाओ, सारे लाइन हो गए। दैट मीन्स नाउ राइट नाउ यू आर यूजिंग ऑल द लाइन्स देयर, जितना लाइन्स था सारे लाइन्स हमने यूज कर दिया। नाउ यू कैन पुट द अप एरो, देखो मैं अभी अप एरो प्रेस कर रहा हूँ तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, इफ यू पुट द डाउन एरो देन यू कैन कम बैक टू द डाउन एरो। ठीक है, सो इट इज एग्जैक्टली सेम टू दैट ऑफ योर नोटपैड। ओके, नोटपैड में इससे थोड़ा सा ज्यादा तुम्हारा क्या है बोलो फीचर्स दिया हुआ है। ठीक है, नाउ सी अगर क्या करना है बोलो, प्रेस एस्केप टू एंटर द कमांड मोड, प्रेस कॉलन WQ टू सेव एंड एग्जिट और द क्वाइट। ठीक है, सपोज मुझे क्या करना है बोलो, इसमें मुझे जो लिखना था आई हैव ऑलरेडी रिटन। ठीक है, I have written something there. Suppose, or you can write what I am from say Assam. Someone may write the Arunachal Pradesh and something like this. Okay, or can say India is my country. Okay, suppose जितना सारा लिखना था I have written it. Okay, now I want to save it. Okay, and come back to the terminal mode. ओके, टर्मिनल मोड से मैंने इसको क्या PI फाइल नाम देके इसको ऑन किया था। अगर फिर से मुझे टर्मिनल मोड तक बाहर निकल के आना है, व्हाट कमांड आई विल बी यूजिंग, ओके, आई विल बी यूजिंग द कमांड कॉल व्हाट द फर्स्ट ऑफ ऑल एस्केप। ऑलवेज रिमेंबर एस्केप। देखो मैं इसमें लिख देता हूँ क्या क्या कमांड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ESC, ओके, प्लस कॉलन, ओके, प्लस W प्लस Q। ठीक है, ये सारे देखो 1 2 3 4 एक साथ लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा तुम्हारा बोलो, यू विल कम बैक फ्रॉम द टेक्स्ट एडिटर PI टू द टर्मिनल विंडो। ओके, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बोलो इज इट क्लियर। ओके, सो एस्केप, देखो इंसर्ट मोड चला गया, इंसर्ट मोड था इसमें, एस्केप प्रेस किया, इंसर्ट मोड चला गया, देन व्हाट द शिफ्ट कॉलन दे दिया, देन WQ एंटर, नाउ वी आर कम बैक टू द टर्मिनल। ठीक है, अगर इस फाइल को मुझे खोलना है देन व्हाट आई विल डू, अगेन आई विल गो, दैट मीन्स सो व्हाट एवर कंटेंट we have just saved there, okay, if we go again to this file, okay, we must be able to see the content. Okay, let us test it. So karo vi file 10.txt enter karo, see all these content are remain intact or the unchanged. Okay,
Again, if you want to come back from this VI to the terminal window, again you have to press your escape colon WQ enter, फिर से इसमें चला गया. Okay, so this is क्या दिया बोलो, प्रेस एस्केप टू एंटर द कमांड मोड, प्रेस द colon WQ टू सेफ एंड क्वाइट. ओके देखो दिस ऑलरेडी इंपॉर्टेंट PI एडिटिंग कमांड. आई कमांड किसके लिए था बोलो, आई इज फॉर द इंसर्ट एट कर्सर, इंसर्ट करने के लिए. ए किसके लिए था बोलो, राइट आफ्टर कर्सर. स्मॉल कैपिटल ए किसके लिए बोलो, राइट एट द एंड ऑफ द लाइन. ओके लेट अस टेस्ट. जो इंपॉर्टेंट होगा आई विल शो यू ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, इंसर्ट मोड में चले जाओ. सपोज राइट नाउ आई एम एट दिस पॉइंट. ओके आई, okay, instead of going one by one, I want to directly come back to the M. Okay, so what to do, you have to press capital E. But it's not working. Okay, most probably this will work in a Vim editor. Okay, let us try once there. WQ. Okay, VIM. So I have told you, likewise the VI you can go for a Vim also. VIM file say 11.txt enter. Okay, exactly same, but Vim editor support more options as compared to the VI. Okay. Escape shift colon WQ enter. Okay, please remember all these things. So I for insert, A for right after cursor, capital A means right at the end of the line. Okay, escape, terminate insert mode, come back to the command mode. U के लिए क्या था बोलो, undo last changes. ठीक है, अगर मैंने विंडोज में कुछ चेंजेस किया तो उसको undo हम कौन सा बटन प्रेस करके करता हो बोलो. What to do if we want to do undo in MS Word? बोलो. Control Z. Yeah, Control Z. Okay, but in case of your VI editor, we have to use what the small u. If you use what the capital U, undo all changes to the entire line. Okay. O for open a new line. DD is थोड़ा important है. DD to delete line. ठीक है, अगर एक लाइन में तुम इंसर्ट मोड में रह के अगर DD प्रेस करते हो तो ये तुम्हारा डिलीट हो जाएगा. ओके, लेट अस चेक वंस. VI10. ओके, DD चला गया. ठीक है, अब इसको अगर अनडू करना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो, कैपिटल U. इंसर्ट मोड में जाओ, इंसर्ट U. देखो आ गया, आई एम फ्रॉम असम. ठीक है, अगर इसको पूरा देखो, अगर इस लाइन को पूरा डिलीट करने व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द कमांड मोड. ठीक है, देखो ये दिस ऑल द कमांड, सो यू हैव टू गो टू द कमांड मोड. कमांड मोड में जाके पहले यू हैव टू पुट द कर्सर, ये पूरा लाइन को डिलीट करना है. तो व्हाट टू डू, यू हैव टू प्रेस D ट्वाइस. DD देखना, DD प्रेस किया, लाइन चला गया. ओके, DD प्रेस करो, लाइन चला गया. इसमें आ जाओ, DD प्रेस करो. देखो नाउ इन दिस लाइन नथिंग इज देयर. ठीक है, अगर फिर से इसको अनडू करना है, यू हैव टू प्रेस U प्रेस करते रहो, अनडू होके सारा चीज समझ में आ जाएगा. Okay, are you getting it? Yes, sir. Okay, yeah. और इसमें देखो डिलीट 3 लाइन्स. अगर 3 लाइन को एक बार में डिलीट करना है तो क्या करेगा बोलो, 3DD, 3 लाइन चला जाएगा. ठीक है, दिस 1 2 3 लाइन को डिलीट करना है, क्या करना है बोलो, 3DD, 3 लाइन चला गया. ठीक है, अनडू करने के लिए U. In this way, please go and check for all the different options. ठीक है, मैंने एक दो जो इम्पोर्टेंट था इसको दिखा दिया. ठीक है, कैपिटल D के लिए क्या होगा बोलो, डिलीट कंटेंट ऑफ द लाइन आफ्टर द कर्सर.
and insert new text. ओके दिस वन ये करने से सी करने से ये हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज डिलीट. सपोज आई वांट टू डिलीट द एंटायर वर्ड. ठीक है, नेम वर्ड को मुझे डिलीट करने हैं. तो व्हाट टू डू, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड प्रेसिंग वन बाय वन डायरेक्टली यू कैन गो फॉर डी डब्ल्यू वर्ड चला गया. ठीक है, अनडू करो आ जाएगा. ओके, डिलीट फुल वर्ड. सपोज नेम ऑफ माय यूनिवर्सिटी को डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो. यू हैव टू गो फॉर दिस वन, फॉर डी डब्ल्यू सार वर्ड चला गया. अनडू करो आ जाएगा. ठीक है, सी आई कैन नॉट शो यू द की प्रेस. ठीक है, वाई, बिकॉज आई एम मेरा स्क्रीन तुम लोग को नहीं दिख रहा है. ठीक है, ठीक है, कीबोर्ड. ठीक है, माई कीबोर्ड इज नॉट visible to you, that's why you cannot see the screen, but I am exactly doing the same thing. ओके, एक्स करके देख लो क्या है तुम्हारा. सपोज आर को मुझे डिलीट करना है फ्रॉम वर्ड. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बोलो, प्रेस द एक्स. देखो दिस इज गॉन. अनडू करो आ जाएगा तुम. ओके, आर करो. ओके, so please go and check for all the different options which is listed in this. Okay, after I complete the class I will share you this material. Okay, ये मैं pdf करके दे दूंगा. From there you can see all the options. Okay, okay, only this much is required from your this one. ओके, नाउ देखो अभी सपोज मूविंग विद इन अ फाइल. सपोज किसी का एरो की काम नहीं कर रहा है. ठीक है, एरो की इज नॉट वर्किंग. तो ये क्या करेगा बोलो, ही कैन गो फॉर ऑल दिस ऑप्शन. के मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू योर अप एरो. ठीक है, जे इज इक्विवेलेंट टू योर डाउन एरो. ठीक है, एच इज इक्विवेलेंट टू योर लेफ्ट एरो एंड आई इज इक्विवेलेंट टू योर राइट एरो. देखो दिस इज द रिप्लेसमेंट की स्ट्रोक ऑफ योर एरो कीज. ठीक है, अगर एरो की काम नहीं करेगा देन यू कैन गो विद दिस ऑप्शंस के जे एच एंड एल. ओके, सेविंग एंड क्लोजिंग द फाइल. तो व्हाट टू डू हियर, शिफ्ट प्लस जेड जेड सेव द फाइल एंड क्वाइट. ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं बोलो, वी आर यूजिंग दिस ऑप्शन. ठीक है, ये सब देखना नहीं है, यू विल गेट कंफ्यूज. ओके, सो ऑलवेज यूज दिस वन. Colon WQ, save the file and quiet and come back to the terminal mode. Okay, this one. So this is all about your VI editor. Let us summarize. Okay, the VI editor is the most popular and commonly used Unix text editor. Okay, any doubt in this line? Anyone? समझ में आया? What does this line says? Yes, sir. Okay. It is usually available in all Linux distribution. जितना Linux distribution आएगा तुम्हारा, in every Linux distribution this VI editor is freely available. Okay. It work with two mode, command mode and the insert mode. ठीक है. In the command mode we cannot insert text. ठीक है, कमांड मोड में हम टेक्स्ट इंसर्ट नहीं कर सकते. कैन यू टेल मी हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम कमांड मोड टू द इंसर्ट मोड? एनीवन? कमांड मोड से इंसर्ट मोड में ट्रांसफर में कैसे करो? या आई प्रेस करने से चेंज होगा. नाउ इफ आई आस्क यू द रिवर्स वन, हाउ यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम इंसर्ट मोड टू द कमांड मोड? बोलो, कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा तो कन्वर्ट फ्रॉम इंसर्ट मोड टू द कमांड मोड? बोलो. See, always remember, from command to insert I, from insert to command escape key. Okay, ESC. इसमें दिया था ना, देखो. To return to the command mode and save the changes, press the escape key, ESC. Okay, always remember this one. Okay, next one you see.
it work into two mode. Command mode takes the user commands and the insert mode is for the editing text. Okay, this line is important. जितना कमांड था ना हमारे यहाँ पे डी डी आई ए ये सब खाली कहाँ पे काम करेगा बोलो इन द कमांड मोड इंसर्ट मोड में ये सब काम नहीं करेगा ओके इन द इंसर्ट मोड ओनली यू कैन मॉडिफाई द टेक्स्ट ठीक है बाकी जितना कमांड है इसको लेने के लिए ऑलवेज यू हैव टू यूज द कमांड मोड ठीक है एस्केप प्रेस करके करना पड़ेगा ऑलवेज रिमेंबर ठीक है आई प्रेस करके करने से क्या आएगा बोलो it will allow you to insert the text okay अगर command को insert करना है then you will be going with the by pressing the escape key okay you should know the commands to work on your file easily okay without knowing the command you cannot do okay मैं जितना सारा बोला इतना सारा जानने से हो जाएगा ज़्यादा नहीं चाहिए from this list if you can remember the 5-6 command then it is okay next one is what learning to is a sodo in e-learning okay so these are the important summary we have done in today's class okay regarding vi editor anyone have any doubt then please let me know because next practical we will be doing based on this topic only okay if you have any doubt okay regarding vi editor please let me know any doubt anyone Sir. what Sir, মানে sir কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ড যদি মানে ডিলিট কৰিব বিচাৰো মানে সেই ৱৰ্ডটো কেনেকে মানে ডিলিট হ'ব স্যাৰ DW কমাণ্ডটো ইউজ কৰিম কিন্তু মানে সেই ৱৰ্ডটো ধৰি লওক স্যাৰ the name of my university is Assam Downtown University মানে ডাউনটাউন ৱৰ্ডটো যদি মই মানে ডিলিট কৰিব বিচাৰো এইটো লাগে ন তুমি কি হয় হয় এইটো ৰিংকি আৰু সম্পৰ্ক তুমি এইটো দি দিবা এইটো তোমাৰ এইটো এণ্ড হ'ব চেষ্টা ওকে স্যাৰ ওকে ঠিক আছে কি কৰিবা তুমি কাৰ্সাৰটো তুমি আনিবা এনেকে কাৰ্সাৰটো আনি হয় ডিট ৰাখিবা এনেকে ৰাখিলা তুমি ডিট ঠিক আছে ডি তুমি কি কৰিবা ডি ডব্লিউ গুচি গ'ল ডি ডব্লিউ এইটো ঠিক আছে এইটো তুমি যোনটো ৱৰ্ড ডিলিট কৰিবা চোৱা এইটো কি থাকে ৱৰ্ডৰ বাউণ্ডাৰী আছে ফ্ৰম এ টু এম দিছ ইজ এ বাউণ্ডাৰী ঠিক আছে তুমি ফাৰ্ষ্ট বাউণ্ডাৰীত লগাবা এইটো ডি ডব্লিউ প্ৰেছ কৰিবা তোমাৰ ডিলিট হ'ব বুজি পালা ওকে আৰু কি আছিলে কোৱা ইউ আচ্ছা আৰু কিবা আছে কাবাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে কোৱা চোৱা যেতিয়া আমি সেল স্ক্ৰিপ্টিং কৰিম তোমাৰ ভি আই ডিৰ বহুত ইউজ হ'ব ঠিক আছে জাষ্ট লাইক আ সি প্ৰগ্ৰামিং we will using one programming statement here also okay it's called a cell programming ठीक है सी का रिवीजन हो जाएगा मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा तुमको ठीक है तो इन एट दैट पॉइंट VI एडिटर इज 2 months needed to us ठीक है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जितना डाउट है पूरा क्लियर करो ठीक है इतना एक्चुअली इसमें इतना डिटेल में कुछ है भी नहीं ठीक है एकदम सिंपल सा चीज है याद रखो कमांड मोड और इंसर्ट मोड आई प्रेस करके इंसर्ट करना है और वापस बाहर आने के लिए क्या करना है बोलो एस्केप :WQ एस्केप :WQ ठीक है ये करना है बाकी हम सेल स्क्रिप्टिंग जब करेगा वे आई विल शो यू हाउ यू आर गोइंग टू टाइप डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स देयर ओके so anything more can I stop here can I stop okay thank you for joining the session thank you for joining okay अगर कुछ डाउट होगा please let me know okay I will help you if you want that I will repeat the class then definitely I'll do okay thank you all next practical हमारा VI editor के ऊपर में होगा ठीक है I will assign you task you have to do okay thank you all thank you sir yeah I'm quitting huh